C4 plants. C4 plants are tropical plants which grow luxuriously in dry, hot climatic conditions. We have discussed C3 plant. C3 plant performs C3 cycle, Kelvin cycle, which are designed for temperate region. Okay, they are mesophyte. What do you mean by mesophyte? All conditions required should be optimum. Means optimum temperature, high concentration of CO2, abundant water in the soil, they will perform very nice. But if we consider the Earth planet having variety of climatic conditions and life should invade everywhere, that too photoautotrophs has to be there because they are producers of the ecosystem. So plant evolve in a perfect way. So first evolution in the plant we have discussed in the kingdom Plantae, and when angiosperms are developed, further they design themselves to be mesophyte, to be tropical plant, to be desert plant, which are camp plants, and even after further development they become epiphytes. What are epiphytes? Morphology में सीखा है आपने, plant के ऊपर grow होने वाले. And in the process of evolution, the plant grows, okay, angiosperm which are designed being terrestrial, जमीन पे डिजाइन होने के लिए, ग्रो होने के लिए उन्होंने खुद को बहुत अच्छे से डेवलप किया, मॉडिफाई किया, टेम्परेट बने, ट्रॉपिकल बने, डेजर्ट में गए, तो प्लांट ने सोचा क्यों ना फिर पानी में चले जाए, एंड दे बिकम एक्वाटिक प्लांट. लोटस, देखो फ्लावरिंग प्लांट है लोटस, समझ रहे हो? सो प्लांट्स शो वंडरफुल अडेप्टेशन. तो ये पूरा अडेप्टेशन हम किंगडम प्लांटे में सीखेंगे, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सा अडेप्टेशन जो मेटाबॉलिक अडेप्टेशन है, जो हम C3 से C4 में पाते हैं. C4 ने खुद को और मॉडिफाई कर दिया, कैम्प प्लांट बनाए. कैम्प प्लांट आर desert plant. They grow very well in dry, hot climatic condition in sandy soil. C4 plants perform C4 cycle. C4 cycle shows a peculiar type of anatomy, Kranz anatomy. सब लोग क्लास वर्क निकालो, Kranz anatomy के डायग्राम एक बार रेफर करो, go through it. Kranz anatomy is a special type of anatomy which is showing the dimorphic, दो प्रकार के क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट में है. Two types of chloroplast, dimorphic chloroplast are present. One is granule chloroplast, other is agranule chloroplast. नाम आपको clear idea दे रहा है. A chloroplast with grana, well-developed grana, is granule chloroplast. A chloroplast with well-developed stroma is agranule, जिसमें stroma बहुत अच्छा developed है और grana थोड़ा reduced है. Leaf mesophyll, जो layer जानते हो, upper epidermis, mesophyll, then vein and lower epidermis. So here mesophyll is spongy parenchyma, and the chloroplast in mesophyll are granule chloroplast performing light reaction, and this first half as well as last half of the C4 pathway, and bundle sheath perform these lower reactions which is mainly involving C3 cycle. Right? So done, gone through the Kranz anatomy. अब relate करते हैं उसको ये diagram से. Daytime stomata open, CO2 diffusion, obviously daytime light available, so all mesophyll cells are performing light reaction as well as the initial steps as well as the last step of C4 cycle, and bundle sheath is performing C3 cycle. Right? ये प्लांट में क्लियरली दो डिस्टिंक्ट लोकेशन है. ओके, लाइट रिएक्शन और ये स्टेप एक अलग जगह, डार्क रिएक्शन ये पार्ट ओके अलग जगह. सो इन C4 प्लांट देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस at two different locations, granule chloroplast and agranule chloroplast. So stomata open, CO2 diffusion, light reaction तो granule chloroplast में दिन भर चलता रहेगा, रात को obviously नहीं. Daytime में mesophyll में CO2 enter in, it is received by PEPA. PEPA plus CO2
It will giving you first stable chemical OAA, oxaloacetic acid. Phosphoenol pyruvic acid is carboxylated to form oxaloacetic acid, which is first stable chemical 4C. As the first stable chemical 4C is present in OAA, the cycle is called C4 cycle. The pathway is called C4 pathway. So first stable chemical is 4C, 4 carbon wala oxaloacetic acid, hence it is called C4 cycle. It was first time discovered by Korczak, so it is called Korczak's cycle. Details are given by Hatch and Slack, hence it is called HSK pathway. Hatch, Slack and Korczak. Okay, अभी हमने बोला कि first half as well as end part occur in mesophyll. Mesophyll chloroplast, granule chloroplast performing light reaction, and this reaction bundle sheath chloroplast or granule chloroplast perform this. Okay, so same cell को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है. पहले साइकिल लर्न कर लेते हैं, फिर इसको रिलेट करेंगे, अंत में क्रांस एनाटॉमी देखेंगे. वी हैव लर्न इट. किस प्रकार से हमने बोला था? C4 साइकिल HSK पाथवे. याद है? चलो बोलो मेरे साथ. C4 साइकिल HSK पाथवे. C4 साइकिल HSK पाथवे. CO2 plus PEPA, OAA, Ma, Pa, PEPA. CO2 plus PEPA, OAA, Ma, Pa, PEPA. Right? C3 cycle तो हमने already learn की है, so that you know. चलो, daytime stomata open, CO2 available, CO2 combined with PEPA, 3C plus 1, you get a 4C chemical, oxaloacetic acid. Here the enzyme which is working is PEPA का carboxylation करवाने वाला PEP carboxylase. PEP carboxylase will cause the formation of oxaloacetic acid, which is a 4C chemical. This chemical 4C is reduced by NADPH. Right? From where this NADPH is coming? It is coming from light reaction. Right? So this NADPH will reduce OAA to form malic acid. Malic acid is again a 4C chemical. 4C chemical transported from mesophyll to bundle sheath is malic acid. Malic acid in the bundle sheath undergo decarboxylation as well as oxidation. What is oxidation? NADP is converted to NADPH. NADP is converted to NADPH, and here malic acid is oxidized to pyruvic acid. Okay, यहाँ पे malic acid ने CO2 डोनेट किया. तो देखो, एटमॉस्फेरिक CO2 आया मैलिक एसिड तक. मैलिक एसिड वो कार्बन लेके बंडल शीथ पहुंचे, और बंडल शीथ में CO2, C3 साइकिल को बंडल शीथ में CO2 देने वाला कौन सा केमिकल है? मैलिक एसिड. So this CO2 is coming here with the help of metabolic reaction, hence this CO2 is called metabolic CO2. This CO2 is coming from atmosphere, so it is called atmospheric CO2. In C4 cycle, atmospheric CO2 causes carboxylation of PEPA, and the metabolic CO2 causes carboxylation of RUBP. Okay, इस प्रकार के MCQ आपको बहुत पूछे जाएंगे. टोटल यहाँ पे 2 जगह कार्बोक्सिलेशन होता है. So C4 cycle is also called dicarboxylation cycle, wherein 2 times carboxylation occur. CO2 enter in C3 cycle, CO2 plus RUBP, you get unstable keto acid, PGA, di-PGA pagal, right? PGL go for glucose formation, remaining PGAL gives you RUMP and RUBP. This is not detailed C3 cycle. यहाँ पे important chemical के नाम लिखे हैं, right? So first stable chemical 3-PGA. It is phosphorylated as well as reduced to form 3-phosphoglyceraldehyde. Phosphoglyceraldehyde goes for glucose formation. So here few form PGAL, few become isomerizes to DHAP. DHAP plus PGL gives you 1 glucose, which is 6C. Remaining PGAL are recycled, phosphorylated to form RUBP. So in C4 plant, in agranule chloroplast, this C3 cycle continuously runs, and rubiscose activity is in bundle sheath cell. Rubisco का काम bundle sheath cell में है. So RUBP plus CO2. This activity is done with the help of RUBP carboxylase in a chamber which is isolated from atmosphere. ये जो चेंबर है बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट का, ये चेंबर में एटमॉस्फेरिक CO2 नहीं आ रहा है,
मेटाबॉलिक CO2 आ रहा है, एटमॉस्फेरिक CO2 पेपा से कंबाइन हो रहा है, तो CO2 का फ्लक्चुएशन एटमॉस्फेयर में होगा. So though the CO2 is very less available, PEPA has great affinity for CO2. It will react with little quantity of CO2 even to produce a stable chemical OAA reduced to malic acid, and malic acid concentration in the bundle sheath is always maintained high. Why this malic acid is always maintained high? Because PEPA is efficient. Efficiently PEPA CO2 को पकड़ के ला के बंडल शीट में छोड़ रहा है, तो मैलिक एसिड बंडल शीट सेल में कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज्यादा रहेगा. ये मैलिक एसिड डिकार्बोक्सिलेट हो गया, तो C3 साइकिल में CO2 abundantly प्रोवाइड होता रहेगा. Right? Okay, so this CO2 which enter in C3 cycle in the bundle sheath in this compartment, concentration of CO2 is always maintained high, and hence RUBP when provided with abundant CO2 will always go for carboxylation, and it will not initiate the process of photorespiration, which is RUBP plus O2. RUBP plus O2 यहाँ पे हो नहीं सकता क्योंकि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हमेशा हाई रखा है, तो ऑब्वियसली C3 साइकिल होगी और एम्पल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बनता रहेगा. राइट? नाउ इंपॉर्टेंट बात, ग्लूकोज बन गया. अब बच्चे वाला पायरुविक एसिड 3C केमिकल ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम बंडल शीट टू मेसोफिल where it is phosphorylated to regenerate PEPA, and PEPA will continuously recycle. Okay, so what we said, we have talked about calculations. For C4 cycle, how many ATP are required? अब देखो यहाँ पे NADPH लगता है तो यहाँ पे बनता है. Here NADPH is used, यहाँ पे NADPH is produced. So this effect is nullified. Here 12 molecules of ATP are additionally required for from PA to PEPA regeneration. तो ये 12 ATP ज्यादा लगेंगे. ओके, 6 CO2 के लिए. अगर एक CO2 की बात करेंगे तो यहाँ पे 2 ATP ज्यादा लगेंगे. Okay, so you have already know that 1 C3 require 3 ATP and 2 NADPH. For 6 CO2, 6 times C3 run consuming 12 ATP, 12 plus 6 that is 18 ATP and 12 NADPH. So ये तो यहाँ पे लगेंगे ही, additionally 12. So this 18 plus 12, 30 ATP for the formation of glucose in C4 cycle. NADPH number is same. In addition to this, I have given you one additional chemical reaction that OAA may be aminated to form aspartic acid. Aspartic acid is transported to bundle sheath, and then aspartic acid use CO2 to C3 cycle. So which chemical is transported from mesophyll to bundle sheath is malic acid, and the other one, it can be aspartic acid. It is either or. Okay, so ये total chemical reaction इस प्रकार से NCERT के बुक में लिखा है. ये ऊपर का mesophyll cell, ये bundle sheath cell. They have not written the chemical's name, but they just mentioned the carbon number. Okay, see, atmospheric CO2 diffusion get dissolved in the cytoplasm water to form carbonic acid. यहाँ पे भी ये हो रहा है, लेकिन हमने लिखा नहीं. Then carbonic acid combined with the chemical which is receiving it is PEPA. Okay, so it is first fixation. This is PEPA. PEPA will give you 4C acid, that is here OAA, which is transported. This 4C acid transported, देखो same thing, and this 4C acid undergo decarboxylation and release CO2 go to C3 cycle. 4C acid undergo decarboxylation, release CO2 go to C3 cycle. Okay, what you get? A 3C acid which is transported back to mesophyll. These openings are called plasmodesmata. So this is a C4 cycle. C4 cycle is performed in C4 plant in which photorespiration is completely avoided because the RUBP carboxylase is always provided with abundant amount of CO2, that is metabolic reactions are providing higher concentration of CO2 to RUBP, so RUBP cannot go for photorespiration. So आपको ये डायग्राम पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछेंगे, ये अच्छे से ध्यान में रखो. और केमिकल स्टेप वाइज रिएक्शन अगर क्वेश्चन पूछने हैं तो ये साइकिल पे ज्यादा पूछेंगे. राइट?
कैलकुलेशन की बात, check the calculations. Number of ATP used for one glucose formation 30. NADPH 12. Number of reductive steps, this one and this one, 2. Number of phosphorylation, 1, 2, 3. Number of phosphorylation, 3. Number of carboxylation, 2. First carboxylation is of PEPA, second carboxylation is of RUBP. Number of decarboxylation, 1. Malic acid undergo decarboxylation. Right? Okay. कभी कभी ऐसा पूछा जाता है, how many additional ATP are required? So for one glucose formational, addition ATP required are 12. For one cycle, additional ATP required are 2. So calculation पे ध्यान देंगे. This is diagram of Kranz anatomy. Look at that. Upper epidermis with cuticle. Then complete mesophyll. Here palisade is absent. So it is a isobilateral leaf-like anatomy. These are large bundle sheath cells and the middle one is vein. Vein is made up of xylem and phloem. Right? So cuticle, upper epidermis, complete spongy mesophyll. Mesophyll में ये additional cells है, bundle sheath. Bundle sheaths are surrounding the vein. So it is a wreath-like structure. Stomata are present on lower epidermis. Okay, so see now. Because the bundle sheath layer is additionally present, the vein which is transporting water is having additional layer, so rate of transpiration is checked. CO2, atmospheric CO2 diffuse in, okay, and here in mesophyll it is received by PEPA. So PEPA plus CO2 OAA MA, ये reaction यहाँ पे हो रहा है. Malic acid transported to bundle sheath. Bundle sheath में malic acid ने CO2 दे दिया. C3 cycle is performed here and glucose is synthesized in bundle sheath. Glucose will go to phloem, converted to sucrose and transported back. Right? So malic acid ने CO2 दे दिया, pyruvic acid बना bundle sheath cell में. 3C acid pyruvic acid transported back to mesophyll and regenerate PEPA, which is ready to receive next molecule of CO2. अब सब लोग मुझे एक बात बोलेंगे NCERT पढ़ के कि कौन से क्लोरोप्लास्ट में, which chloroplast contain small chloroplast, many in number, which contain large chloroplast and maybe less in number. तो ये दोनों चीजें आप NCERT पढ़ के एक बार क्लियर करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे. क्या लिखेंगे? Mesophyll cell contains dash type of chloroplast, dash in number. दूसरा स्टेटमेंट, bundle sheath cell contain dash number of chloroplast, dash in size. NCERT पढ़ के ये इंफॉर्मेशन आपने लिखनी है और ये भी एक बात नोट करनी है, क्या ये आपने इसके पहले पढ़ा था? रिवीजन में ऐसे पॉइंट हमको हाईलाइट करने हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फोटो रेस्पिरेशन C2 cycle. Okay, as we said, photorespiration C2 cycle is found in C3 plant when the atmospheric CO2 is less, temperature is high. Okay, so here it is mentioned high temperature, low CO2 concentration. In this situation, Rubisco combined with oxygen. Okay, अब यहाँ पे देखो, ये समझ लो Rubisco का एंजाइम है, ये Rubisco की एक्टिव साइट है. This active site, same active site is working with CO2 as well as OT. What is active site? It is the actual part of the enzyme which recognizes the raw material. Okay, जैसे मैं कह सकती हूँ कि for light in your body, the active site is your eyes. For taste in your body, the active sites are on your tongue. And for touch or temperature,
The active site is present even on tongue, okay, on skin, etc. Active site is a location which senses that particular chemical. So ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. यहाँ पे ऐसा साइट है जो CO2 और O2 दोनों को पहचानता है. तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, उससे ये कंबाइन होगा, बिकॉज ऑल दीज केमिकल्स आर accidentally colliding with each other. So Rubisco has this active site which is sensing CO2 as well as O2. If CO2 is more, it will combine with CO2 and perform C3 cycle. If CO2 is less and O2 is more and temperature is high, Rubisco will combine with O2 and initiate the process. Okay, हमने कैसे लर्न की थी, कैसे बोला था हमने, पहले रट्टा मार लेते हैं. चलो, फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल, फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल, RUBP plus O2, RUBP plus O2, phosphoglycolate, phosphoglycolate, glycolate, glycolate, glyoxylate, glyoxylate, then glycine, glycine, serine, serine, hydroxypyruvate, hydroxypyruvate, glycerate, glycerate, then 3-phosphoglycerate, 3-phosphoglycerate. Okay, ये हमने सीक्वेंस लर्न किया था. Right now, entire this process require 3 organelles. Initial steps occur in chloroplast, second peroxisome, and third one mitochondria. So, when atmospheric CO2 is less, O2 is high, Rubisco will combine with oxygen. Rubisco contains 5 carbon atom. So, 5 carbon atom plus oxygen. So, only 5 carbon atom are there. यहाँ पे CO2 नहीं आया, तो ये 5 कार्बन के 5 कार्बन ही रहेंगे. ये 5 कार्बन स्प्लिट अप होंगे 2C और 3C में. 3C वाला PGA C3 साइकिल में जाएगा, 3C वाला PGA C3 साइकिल में जाएगा, लेकिन बाहर से कार्बन, एटमॉस्फेयर से कार्बन आया ही नहीं है, खुद का ही RUBP है, उसी के 3 कार्बन ये साइकिल में गए. तो ऑब्वियसली प्रॉफिट का बिजनेस नहीं होगा. खुद ही के कार्बन C3 साइकिल में इन्वेस्ट किए, तो एडिशनल ग्लूकोज नहीं बनेगा, बस ये साइकिल होती रहेगी जिसमें ATP और NADPH कंज्यूम होते रहेंगे और एडिशनली ये केमिकल बनेंगे. ये केमिकल प्लांट को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से, हाई इंटेंसिटी, हाई टेम्परेचर से C3 प्लांट को जो डैमेज होता है उससे बचाता है. सो दो इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस, इट इज सिग्निफिकेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट. सो 3C केमिकल PGA C3 साइकिल में गया, लेकिन ये उसी के कार्बन है, 3 कार्बन RUBP से आए वाले, तो यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा. 2 कार्बन जो बचे थे उससे बना फॉस्फोग्लाइकोलेट. फॉस्फोग्लाइकोलेट इज द रॉ मटेरियल जहां से C2 साइकिल शुरू हो गई. ओके, सो फॉस्फोग्लाइकोलेट इज अ डीफॉस्फोराइलेटेड टू फॉर्म ग्लाइकोलेट. नाम की तरफ देखेंगे तो केमिकल रिएक्शन समझ में आएगा. फॉस्फो चला गया तो क्या बचा, ग्लाइकोलेट. ग्लाइकोलेट ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट टू पेरोक्सिसोम. Here glycolate will combine with oxygen and form H2O2. H2O2 is a poisonous toxic chemical. Peroxisome has the enzyme to degrade it and will not cause any damage. So phosphoglycolate is oxidized. First oxygen यहाँ पे oxidation यहाँ पे हुआ, दूसरा oxygen addition यहाँ पे हुआ. Phosphoglycolate converted to glycolate. Glycolate oxidized to produce glyoxylate. Glyoxylate is then forming glycine, which is a type of amino acid. And you get one molecule of glycine. Just imagine, एक O2 आया, एक RUBP, एक ग्लाइसिन बना, दूसरा O2 आया, दूसरा RUBP, दूसरा ग्लाइसिन बना. तो ये प्रोसेस 2 बार हुई तो आपको 2 ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल मिलेंगे, 2C 2C. सो टोटल यू हैव 4C. 4C में से एक CO2 चला गया, 4C में से एक CO2 चला गया, तो हमको क्या मिला, सेरीन. एंड सेरीन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम mitochondria to peroxisome, converted to hydroxypyruvate, and pyruvate regenerate the glyceric acid which is phosphorylated to form phosphoglyceric acid. आपको ये केमिकल के नाम ध्यान में रखने हैं, उसमें कौन सा केमिकल कौन से केमिकल रिएक्शन से आपको कैसे कैसे केमिकल देता है, ये डिटेल सीखने की जरूरत नहीं. जस्ट लर्न द ऑर्गेनेल्स, learn the chemical reaction. Okay, which chemical is the first chemical? Phosphoglycolate. Which chemical get transported from chloroplast to peroxisome? Is glycolate. Okay, glycine is synthesized in peroxisome. Second oxidation occur in peroxisome. First oxidation occur in chloroplast. How many oxidation occur? 2.
which is the amino acid glycine. Okay, how many carbon are in glycine? 2C. How many carbon among the 4 are wasted? 1. So what is the percentage? 25%. How many are recycled? 3. 4 में से 3 मतलब 75% is conserved. Okay, glycine, serine are amino acids. So ऐसे स्टेप पे रिएक्शन पूछेंगे. ये वेस्टफुल प्रोसेस है लेकिन प्लांट को जिंदा रखने के लिए मदद करती है. दिस इज CAM पाथवे, क्रासुलेसी एसिड मेटाबॉलिज्म. आपके डायग्राम जैसा ही है, बस वर्टिकली ड्रॉ किया है. सी, दिस इज नाइट टाइम, दिस इज डे टाइम. आपको लर्न करने के लिए मैंने एक बेसिक बात बोली थी. CAM plant is just like C4 plant. Whatever chemical reaction occur in mesophyll will occur during night, and the chemical reaction which are occurring in bundle sheath will occur in day. Okay, so here the process is otherwise exactly similar. So हम अगर learn करेंगे तो देखो CO2 plus PEPA, 4C chemical OAA converted to malic acid transported, right? So malic acid gives CO2 to Kelvin cycle, okay? Pyruvic acid generated, carbohydrate, and giving you regenerating phosphoenol pyruvic acid. Barabar? Okay? So this is how the process is same. CO2 plus PEPA, OAA, MAPA. Pa is converted to carbohydrate, that is starch, and from carbohydrate starch, PEPA is regenerated. Okay, otherwise the things are same. Different सबसे एक important बात ध्यान में रखेंगे. C4 प्लांट में Kranz anatomy नहीं है, but opening and closing of stomata reverse है. Okay, what is reverse? During night time stomata open. Why stomata open during night time? Because these plants are desert plants, they are succulents, they have to face very high temperature and less water content in the soil. So in that situation, if the plant opens the stomata during daytime, the plant will be dehydrated and died. It should not happen. So plant adapted wonderfully. Stomata are kept open during night. रात को टेम्परेचर कम है तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कम होगा. रात को टेम्परेचर कम है, स्टोमेटा ओपन, CO2 enter in, received by PEPA, a 3C chemical, to form a chemical stable OAA, oxaloacetic acid 4C. It is reduced to malic acid. रात भर मैलिक एसिड बनता रहेगा. ये मैलिक एसिड जब समझ लो, मैंने टाइमिंग वाइज आपको बोला था कि 7 बजे बनना शुरू हुआ, 12 बजे तक 2 ml है, 2 बजे तक 4 ml है, और सुबह 5 बजे ये 10 ml हो गया. जैसे ही मैलिक एसिड ज्यादा हो गया, पीएच एसिडिक हो गया. एसिडिक पीएच में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे और डे टाइम में मैलिक एसिड CO2 देगा C3 साइकिल के लिए. सो डे टाइम में लाइट रिएक्शन हो रही है, स्टोमेटा बंद है, फिर भी मैलिक एसिड CO2 दे रहा है, तो C3 साइकिल होती रहेगी. आई रिपीट, डे टाइम में स्टोमेटा बंद है, लाइट रिएक्शन तो हो ही रहा है, लेकिन स्टोमेटा बंद होने के बावजूद CO2 कहां से आएगा? मैलिक एसिड इज प्रोवाइडिंग द मेटाबॉलिक CO2 which enter in C3 cycle. Normally C3 cycle will occur to prepare carbohydrates. Okay, so malic acid is oxidized, decarboxylated to produce pyruvic acid. Pyruvic acid in a multi-step reaction converted to carbohydrates. Okay, अब देखो, pyruvic acid जो एसिडिक है वो यूज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, यूज हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, तो ऑब्वियसली पीएच अब एसिडिक से न्यूट्रल और न्यूट्रल से थोड़ा बेसिक होगा. बेसिक पीएच हो गया, स्टोमेटा ओपन इन इवनिंग एंड द प्रोसेस विल कंटिन्यू. सो C3 plants are very important in temperate region, C4 doing very nice in tropical region, and CAM are designed for desert regions. Understood? So this is how the important pathways are.